तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही एक्साइटिंग सेशंस लेके आया हूँ और हमारे बीच में है यहाँ पे सैम, जो आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। इन्होंने आईआईटी जैम एग्जाम्स को यहाँ पे क्वालिफाई किया है और इस समय ये अपनी आईआईटी से प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है, खासतौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इस एग्ज़ाम से डर लगता है, एक तरीके का फोबिया है। उनको ये लगता है कि हम इस एग्ज़ाम्स को यहाँ पे कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे सैम आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। तो हेलो सैम, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ। मैं बढ़िया। ओके। तो सैम, थोड़ा सा आप अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप इस समय कौन सी आईआईटी से मास्टर कर रहे हो, कौन सी ब्रांच में आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। थोड़ा सा ब्रीफ में अपने बारे में बताइए, लिटिल बिट। So hi everyone. So we're preparing for the JAM exam for 2025. So my name is Sam. मैं आंध्र प्रदेश से आ रहा हूँ. So I'm currently doing MSc in Physics. So I'm from IIT Madras. So so currently my specialization is, so there is no specialization in physics. So as you know. So currently I'm doing, like, and my specialization will be in quantum optics currently. तो सैम, थोड़ा सा अपने बारे में ये बताइए कि आपने अपना ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी आपने कब कंप्लीट किया था, किस ईयर में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, थोड़ा सा इस बारे में हमको बताइए। So my graduation, I completed my BSc from my home state in Andhra Pradesh. So I completed it in 2022. ओके। So I had a 1 year gap in between before I attempted for a JAM exam. ओके, तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो 2022 में कंप्लीट हो गया था और उसके बीच आपने फिर यहाँ पे ड्रॉप लिया और उसके साथ आपने आईआईटी जैम की प्रिपरेशंस करी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे उस चीज़ को मैनेज किया, क्योंकि एक जो ड्रॉपर होता है वो घर में रह के जो पढ़ाई करते हैं, वो आपने कैसे मैनेज किया। और आपका थोड़ा सा जो फैमिली एनवायरनमेंट है उसके बारे में बताइए कि फैमिली आपकी सपोर्टिव थी, किस टाइप की थी। थोड़ा सा इस बारे में हमको बताइए। So back at my home, like, they are supportive, but the thing is, like, during my BSc in my college, so they didn't teach me in a depth so that I can crack the JAM exam. So most of the students currently are also now facing the same issue I also face. So हम्म। because of that, I took a drop. I also had this motivation, like, waiting is not wasting time. So I hope, like, most of you guys, like, whom are taking a drop, is हम्म। not wasting your time, guys. So, like, so at ये my home they are supportive in a sense, like, they'll support me, but like I don't have the resources to study a lot. So like I studied just for 4 months before I gave the JAM exam in 2023, I guess. So like I just studied just 4 months, which is much enough for me. हम्म। So can I explain, like, just my strategy and यस the यस यस, things I. कैन यू। So I started my preparation like in September, mid of September, something हम्म। like that. So then onwards, like, I used to attend like lectures, few lectures, online lectures. Most of them are online lectures I had. So morning I used to take the lectures, evening I used to practice. Like on the daytime, like, just attend like lectures and then evening practice. So I continued. The main important thing is consistency. हम्म। And the other thing is, so when you study things, you know, just be honest to yourself. Like, when you study things, you know which things you are strong at, which things you are weak at. Everybody has some strong points, everybody has some weak points. So I had a very little time. हम्म। मेरे को थोड़ा समय है, like, just हम्म। 4 months. Cracking jam is not so easy, like, if you have 4 months, and if you don't have a good background. So what I did is, I analyzed the previous years, like what are the previous years and which topic having more weightage and which topic having least weightage. And the other thing is, like, IFAS provides like what is the cutoff for this. हम्म। You usually provide analysis method, like which topic has this thing and which topic has more weightage and this stuff. So I analyzed like which topic is easy, which topic is I'm strong at. So I prepared mainly focused on it, and like my main focus is just score like half of out of 100, just score 50. You will be in safe side. That is my strategy because I don't have any time to हम्म। score full out of them.
ओके ओके So ओके। in which things I am strong at, I fortified them. So like which things I'm strong at. So like when you take electronics, there you can expect every year you can expect a this op-amp question. हम्म। So I solve all op-amp questions. So my 3 marks are secure. ओपन क्वेश्चंस The तो finals. इलेक्ट्रॉनिक्स में आते भी हैं, Yeah, इजी है। yeah. Easy questions are in electronics. You can just apply the formula and you will get it. यस यस यस। So I focused on this kind of things. If you take classical mechanics, it is हम्म। a huge subject. टू So you सब्जेक्ट, can't tell where it comes रोटेशनल from. Of सर्कुलर course, मोशंस। yeah, it is like very huge formulas and very big thing. I don't say I didn't study that. I studied that as a safe side, but like I focus less on that. I my main strong is like thermodynamics, which is very short and you can cover it in a single day also. The ओके। thermodynamics and electronics. There you can't do any mistake. So there are some things like the quantum well. Every यस year यस। you expect one question. So like that I built for 50 marks. So I can guaranteely secure 50 marks. And then I went on to the other subjects where I am weak at. So in such a way, like when you correctly plan it, when you do it analysis, when you do previous year analysis, so it's easy to get. And I used to particularly focus on the questions which I can do very easily in a less time. And the other thing most of the people fear is like during exam we have this anxiety attacks. I am also not an exception. Even though like I got in IIT Madras, but it is not an exception. You get anxiety attacks. But the thing is like be confident on yourself. That's it we can say. तो थोड़ा And the सा other thing is अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। just one हम्म more thing. हम्म Of course, in IIT Madras, I have very good, talented friends. हम्म Like they are much talented than me हम्म। when it comes to academics. Also, like in my class, also like they are really good. जब हम ऐसी But the जगह पे thing जाते is, हैं ना, जैसे आपने बताया कि आपसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग वहाँ पे हैं, तो जब हम लोग ऐसी जगह जाते हैं जैसे आईआईटी जाते हैं या हम कहीं जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग अभी इस धरती पे हैं, इस अर्थ पे हैं, और हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये फील मेरे को भी आता है कि यार मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग मेरे आसपास घूम रहे हैं, तो लगता है वो चीज़। अब मैं आपसे ये मतलब मैं अगर इसको पूरा समराइज करूं, मतलब आपकी बातों का, तो मतलब किसी भी स्टूडेंट्स को जो जिसको अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ। एक तो इन्होंने बात करी यहाँ पे कंसिस्टेंसी की, कि अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी है, अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जैसे सैम ने बोला कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, तो ड्रॉप लेने का मतलब यह है कि आपको पूरा टाइम अपनी प्रिपरेशंस के ऊपर फोकस करना है, किसी भी तरीके का आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, इन्होंने ये बहुत अच्छी बात बताई कि आप अपने प्रीवियस ईयर्स जो भी आपका है उसका आप प्रॉपर पेपर एनालिसिस देखिए कि हाँ भाई किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस निकल रहे हैं, कट ऑफ पे आपको फोकस होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्होंने बोला कि इन्होंने से यहाँ सॉल्व किए हैं, और साथ में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया कि कैसे ओपीएम के क्वेश्चन के साथ डील करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एसएसपी हो गया, और इन्होंने बोला थर्मोडायनेमिक्स इन्होंने वन डे में ही निपटा दिया। तो आप भी इनसे, है ना, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका अगर आप ये बोलेंगे तो नंबर भी मैं आपको दिलवा दूंगा। साथ में सैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कौन सी बुक्स यहाँ पे प्रिपेयर करी अपनी प्रिपरेशन में, तो आप बुक्स के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, ऑथर नेम या कौन सा स्टडी मटेरियल आप फॉलो करते थे। so actually like I didn't much for to be frank, like I didn't much focused on the materials. Actually, like I just listened to the lectures. हम्म। The class notes is more than enough. Like the one you give in the classes, that is ओके ओके more than ओके। enough. And the other thing is like if you have time, like someone who is preparing for BSc, हम्म। like if they have more time, so they can go through quantum mechanics by DJ Griffiths. अच्छा It हाँ, is really good. It गुड is बुक। really good. Like they'll really get the depth of the understanding of what is quantum mechanics. डेविड जे And ग्रिफिथ है। they was और ऐसे और इसके लिए आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, विच बुक। classical mechanics, like you can follow Goldstein's. I mean, it's गोल्डस्टेन। a little bit advanced, हम्म but Goldstein is much better. If you want much more advanced, we can go for Landau and Lifshitz. Like in our हम्म। class also, they'll teach this Landau and Lifshitz हम्म। currently. Like they'll teach the whole book as a curriculum actually. और इलेक्ट्रॉनिक्स। Uh, Electronics, I would say like your classes are much better. I mean, like rather than going to some other books, classes are much better अब because like इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दो चीज है ना, एक एनालॉग अलग है, डिजिटल अलग है, uh, तो डिजिटल के लिए analog कौन सा electronics, आपने digital. फॉलो किया।
for me, I just followed the lecture notes. That's, हाँ, I क्लास mean, लेक्चर नोट when इनफ it है। यस यस when यस। it comes to like electronics, the better thing is to follow, remember the techniques, like how to solve the circuit diagrams is much more important. हम्म। In electronics, practice is much more important because you can get the answers very easily just by seeing it. ओके ओके। थोड़ा सा So, सैम, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, कि आफ्टर मास्टर्स आपका फ्यूचर प्लान क्या है, कि आप क्या करना चाहते हो उसके बाद। so currently, yeah, my future plans are like going for a PhD mostly, हम्म। or otherwise I want to do a job in R&D department of something. We're having some recently we're having this job sessions also. I mean, like interview placement season is going on in December. So yeah, we have to like whichever the opportunity it is, like I'm ready to delve in. So ओके, तो ठीक है I तो। mean, like when it comes to IIT, so you have like until now what you saw is very limited. When it comes to IIT, like huge number of spectrum is open for you, like which future you want to choose. हम्म। तो थोड़ा सा मैं ये लास्ट में बस इतना कहना बोलना था कि जो हमारे ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स हैं, आप उनको कुछ टिप्स देना चाहते हो कि जो अपनी प्रिपरेशंस को यहाँ पे अच्छे से कर सकें, कुछ ड्रॉपर्स के लिए टिप्स लास्ट में। Yes. Okay, for the droppers, I'll say like yeah, ड्रॉपर या for the क्वालिफाइंग drop, स्टूडेंट्स, कुछ सम टिप्स फॉर जो आईआईटी जैम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। yeah, I say what I say is like what कुछ is पॉइंट्स में बता सकते हैं, मतलब कि क्या टाइम होना चाहिए, मैनेज कैसे टाइम को the मैनेजमेंट करें, कैसे क्या करें, थोड़ा बहुत लिटिल बिल 5 बुलेट strongest thing. पॉइंट्स ऐसे करके। Yes. Uh, so the best time to study, everybody knows, but nobody follows is the best time to study is early morning 5 o'clock. ओके ओके। So first do your revisions, like formula revisions and topic revisions early in the morning. Early in the morning, when you wake up, immediately open the book and study. Even if you study 5 times, 6 times, 7 times. Study, study, study. Practice makes more perfection. And then during afternoon, like the concentration level is very less. So during the afternoons, practice the practice solving problems. And there is this trick I followed before the exam, sir. So already like before only you'll get like which slot your exam will be. Either it is in morning slot or evening slot, afternoon slot. So what I did is like for the like just before 1 month before the exams, I know my exam slot. So what I did is in that particular 3 hour slot, when my exam is going to happen on that particular day, every day, that particular 3 hours, I used to solve full length papers on that particular time. I hope you can understand. Like when my exam, so if my exam is from afternoon 2 to 5, every day I used to solve from 2 to 5 a full length test, giving my यस। 3 hours completely focusing on the exam. So when it comes to the exam day, so I don't need to worry like because of the schedule. So this is one of the tip I followed. And the other thing is maintain a short notebook, formula book. So while going to exam, just before exam, just to open and like just revise. So ओके, having a short formula book is one of the important thing. ठीक है ठीक है। तो ठीक है Yeah. सैम, फिर आपको यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो मिलते हैं आपसे अपने आने वाले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। Thanks.